Good evening, everybody. नमस्कार, this is Rachna Bothra. सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लें, please. Another namesake of mine, Rachna Bedi ma'am, please switch on your video. Okay, I can see most of you all with your camera on. So what have we gathered here for? हम किस लिए इकट्ठा हुए हैं? Anybody, please write in the chat box. What is the purpose of this webinar? I can still see a few cameras not on. Any reason to hide behind the camera? कोई reason है क्या? Chinni Babu sir, please switch on your camera. Varsha ma'am, please switch on your camera. It would be really nice. And there's somebody called Mercy ma'am. Please switch on your camera. That would be great. Okay, तो हम किस लिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ? Curious to know about your webinar. Chanchal ma'am writes, curious to know about your webinar. That is great. Okay, for medicine less treatment. Okay, तो क्या आप लोगों को लगता है कि न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम यानी कि जॉइंट पेन मोस्टली से निकलना डिफिकल्ट है? पेन्स रिलीफ होना डिफिकल्ट है क्या? इज इट डिफिकल्ट? अष्टांग हीलिंग, यस, अष्टांग चिकित्सा हीलिंग को हम लोग हिंदी में चिकित्सा बोलेंगे, तो अष्टांग हीलिंग चिकित्सा सेम ही हुआ। तो क्या आप सब लोगों को लगता है कि जॉइंट पेन से मुक्ति पाना, रिलीफ होना डिफिकल्ट है? यस और नो? नो, दैट्स रियली पॉजिटिव फॉर न्यूरोमस्कुलर इश्यूज. Yes, some people are writing yes. So I would say it is not difficult, but it is not easy either. अब ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? How is it possible that it is a no as well as a yes? So how many people are curious to know this? आप निकल तभी सकते हैं the day you determine to take charge of your health. So how many of us are ready to take charge of our health? कितने लोग अपने पे काम करना चाहते हैं? To work a little hard, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लेंगे. सांस हम सभी लेते हैं. अब उस सांस में आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगा कि जहां पर आपको प्रॉब्लम है उधर आपको सांस को डायरेक्शन देना है. वो कैसे करना है वो हमारे स्वामी जी बताएंगे, पर आपको रेडी होना है इस काम के लिए. So give me a thumbs up. How many of us are ready to take charge of our health? सबने मेडिसिन खा के देख लिया, दुखी हो गए मेडिसिन से, और 4 साइड इफेक्ट है. बट जब हम अपने ऊपर काम करेंगे वो भी सांस के द्वारा, so we know that उसका तो कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकता. यस और नो? कैन देयर बी एनी नेगेटिव साइड इफेक्ट विथ दिस ब्रेथ होल्ड टेक्निक? कुछ हो सकता है क्या? जब आप दवाई खाते हैं, आप केमिकल अपने अंदर डाल रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है. बट जब आप इंटरनल मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं, you are strengthening your weak forces. Can there be any negative side effect? Absolutely no. जो भी आपको मिलेगा वो पॉजिटिव ही होगा. Okay, so I would like to share the PPT if you give me permission to share little more about Ashtaang चिकित्सा. क्या मुझे आपकी परमिशन है? Do you give me? Yes. Okay. Ishani ma'am writes yes. Just give me 2 minutes. Anil ji, can you see the screen? Yes, yes. Okay.
Just 2 minutes. There is some net issue, so it's taking time. In the meanwhile, if you can share your name and number. So here we are. Okay. Ashtaang Chikitsa, the much awaited webinar for online therapy for neuromuscular. Okay. So namaskar. I welcome you all to the Ashtaang Chikitsa webinar. My name is Rachna Bothra and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. तो क्या करते हैं हम आखिर Avisa Healing में? So somebody wrote in the chat box, they are curious to know what this webinar is all about. So in today's webinar, we will present to you a unique therapy for curing neuromusculoskeletal problems, जो आज के टाइम में काफी prevalent हो गया है. No age bar is there. 30 above or maybe even less than that, people are suffering from all sorts of neuromusculoskeletal problems. So in today's webinar, we will present to you a unique therapy for curing your neuromusculoskeletal problems. जो मैंने अभी बताया कैसे आप अपने पेन से मुक्ति पा सकते हैं. I'm sure nobody enjoys eating medicines or popping a pill early in the morning, but we have to because we are in pain. So वो पेन से आपको छुटकारा कैसे मिलेगा? That is what this webinar is all about. So now I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji. Now, who is Swami Raj Vibhuji? He's a rare Kumbhak yogi and a human exponence expert. तो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने बहुत लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म किया है, उनको निकाला है क्रॉनिक डिजीजेस से, जिसके की एलोपैथी में कोई भी इलाज नहीं है. So what are those diseases? Those diseases are thyroid, BP, heart, diabetes, and even life-threatening diseases like cancer. इन डिजीजों से स्वामी राज विभू जी ने अपने थेरेपी से इन डिजीजों से बाहर निकाला है, not only in India but in Europe and the USA. At Avisa Healing and Fitness, we are reviving Ashtaang Chikitsa to address the structural issues of a human being. तो हम क्या बोल रहे हैं जब हम बोलते हैं structure of a human body? The musculoskeletal system is one of them. So how the structure of the human body can function in its best possible way? वो हमारा मकसद है अवीसा हीलिंग एंड फिटनेस में. A profound way of addressing the aspects of a human body. So who is this webinar for? किसके लिए आखिर ये वेबिनार है? For people who are tired of temporary treatments and are looking for a natural and permanent solution. For people who want to take charge of their health, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आपको अपनी responsibility लेनी है. You have to take charge of your health in your own hands. कोई भी external intervention पे depend नहीं करना है, and are willing to work on themselves to come out of their health problems. So reversing neuromusculoskeletal problems with Ashtaang Chikitsa. Freedom from pain and medicines. सबको चाहिए मुक्ति दर्द से और दवाइयों से. तो अभी हम लोग सुनेंगे स्वामी राज विभू जी से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं.
उसके पहले I will just give you a brief of the 8 levels at which the body works. जो आपको बैलेंस में लाना है, जब आपको न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स होता है, तो कहीं ना कहीं आपको 8 levels में प्रॉब्लम है. That is what we try to discover by the Pran Shakti diagnosis, which is a unique way of diagnosing the root cause of your problem. Mind you, this is not a medical diagnosis. ये आपके बॉडी के ऊपर हम लोग काम करते हैं, आपके सिम्टम्स के ऊपर. Not what the medical professional has tagged you as rheumatic arthritis patient or a ankylosing spondylitis patient. We work on the symptoms और आपको कहाँ से शुरू हुआ है problem. For example, if there's an inflammation in your knee, we think that it is a localized inflammation, but it might root its cause to your liver. The malfunction of the liver may lead to this inflammation. तो हमारा जो थेरेपी है वो उस जगह काम करता है कि आपको जड़ से पेन को निकालना है. Okay, so what are these 8 body levels that we are talking about? सृष्टि शरीर, गर्भ शरीर, दोष शरीर, मर्म शरीर, ब्रह्मांड शरीर, संख्या शरीर, prakriti, and the vikriti sharir. So now the last two things, prakriti and vikriti sharir in neuromusculoskeletal problems is very, very prevalent. What happens is the imbalance of the regeneration and the degeneration of the cells. आपको पेन, इन्फ्लेमेशन इसलिए होता है. तो जब हम ये बैलेंस करते हैं हमारे अष्टांग चिकित्सा में थ्रू ब्रेथ होल्ड और कुंभक थेरेपी, then you start feeling the pain relief. So without wasting much time, we will get into some of the disease. We could not list the entire disease because there are lots of them, but कुछ diseases जो commonly देखा गया है आज के लोगों में जो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, वो कौन कौन सा प्रॉब्लम है? नी पेन, लोअर बैक पेन, हिप इश्यूज, पेन इन द लेग. आज घर घर में लोगों को ये सब इश्यूज हैं, चाहे बूढ़े हो या बच्चे हो, सब लोग ये कुछ ना कुछ इश्यूज से तड़प रहे हैं और उनको सल्यूशन नहीं मिल रहा है. ड्रॉप फुट, अगेन अ इशू ऑफ द नर्व्स. स्पाइन रिलेटेड इशू, स्लिप डिस्क, डिस्क बल्ज, वीक स्पाइन, हमारी रीढ़ की हड्डी जो धीरे धीरे वीक होने के कारण हमें लोअर बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, क्योंकि वो मेन चीज है जिसपे हमारा पूरा बॉडी रिलेट करता है, द स्पाइन. स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, ड्रूपिंग शोल्डर, टेनिस एल्बो, rheumatic arthritis. Everybody knows it is an autoimmune disorder which has no solution, but in Ashtang Chikitsa we do find a way to heal it. Osteoarthritis, a degenerative disease. Osteoporosis, very prevalent in women post 50 after their menopause. Dislocation, neuropathy, and nerve issues. So let's hear from Swami Raj Vibhuji what exactly is Ashtang Chikitsa और क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है और कैसे आप उससे बाहर निकल सकते हैं. Thank you so much for listening to me patiently. I would request everybody to keep their names and numbers in the chat box so that we can get back to you and your health issues. I'll just tell you how the webinar will proceed. First, we will be showing you the recording of Swami Raj Vibhuji to educate you about what exactly we do at Ashtang Chikitsa. Secondly, we are going to
bring up some people who have done Ashtang Chikitsa and how they have benefited by it. Then we will be sharing with you the program details. And lastly, Swami Raj Vibhuji himself will be coming to answer all your questions and doubts. So please, आपका जो भी questions है, आप excuse me, आप chat box में लिख सकते हैं. Otherwise, you can also raise your hands and I will be taking them up one by one. So thank you so much. Over to Anilji to share the screen. Yeah. Thank you, Rachna ji. Just give me 2 seconds. So let's start. Neuro Musculoskeletal problem. We are talking about Neuro Musculoskeletal problem. आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है, they actually create every movement in your body. आपके शरीर में वही movement create करना है. So I'll take one example and let's go ahead understanding why problem happens and what is the solution. मैं एक example से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे. So suppose what is the most common problem at this point of time? सबसे common problem क्या है आज के समय? Knee pain. Let's take knee pain as an example and understand what we are talking about. हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में knee pain से start करते हैं, right? So some person who got an injury in one of the knees will get a knee problem in that leg. है कि नहीं? अगर एक नी इंजरी किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी. और स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज समहाउ डैमेज्ड वन नी, एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी. बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम. डज एवरीबडी हैज डैमेज देयर नीज? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? नो. People are still getting into problem. Then when you go to the doctor with your knee problem, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके, and the most common thing that you hear is degeneration in the joint. जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वो तो आपके घुटने घिस गए हैं, isn't it? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा, उसको बनना भी चाहिए था, रीजनरेशन भी होना चाहिए. रीजनरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन सिस्टम, बट रीजनरेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली, डीजनरेशन इज हैपनिंग. दूसरा कारण हो गया, नाउ सम पर्सन गोज टू अ डॉक्टर विथ अ सोलोन नी, इन्फ्लेमेशन इन द नी, लालीपना है उसके घुटने में, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है. The doctor will still say there is a localized problem at the knee. वो कहेगा एक्सरे करा लो, वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो, and he would try to see the problem there itself. वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा. But do you know why inflammation happen in your body? Why inflammation क्यों होता है? सूजन क्यों हो जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका लिवर ठीक नहीं है. If your liver gets impacted, there will be inflammation in the body. If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So क्या इसका रीजन ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So even if you go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%. 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला. So your problem will remain undiagnosed. Usually these diagnoses are not done. तो इन्फ्लेमेशन क्यों है यहां पे आपके जॉइंट में? प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिवर प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ किडनी प्रॉब्लम, because there is an issue with digestion. Now Rachana ji said after menopause, osteoporosis, osteoarthritis
is very common. Yes. What does it mean also? आपका घुटना का दर्द क्या रीजन क्या हो सकता है? Hormone imbalance, isn't it? Another reason is hormone imbalance. हार्मोन इंबैलेंस होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा, लोअर बैक पेन एंड योर नी पेन कैन हैपन. सो व्हाट आर यू डूइंग टू बैलेंस योर हार्मोन्स? देयर इज नो वे, कोई तरीका नहीं है. नाउ इफ द ऑस्टियोपोरोसिस हैज हैपेंड, हड्डियां अगर ब्रिटल हो गई, कमजोर हो गई हैं, पोरस हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर. इफ दे हैव बिकम ब्रिटल by calcium, how many people have come out of osteoporosis by taking calcium? Not even a single example. एक भी example नहीं है. Rather, do you know, if you take long-term calcium, the chances of breast cancer will increase by 200%. So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors, 8 कारण हैं because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is Ashtaang Chikitsa. Now, in the last 50 years, पिछले 50 साल, 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा to the extreme, what the doctor will say, do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean? It cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें जरा. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? Did they have problem at this age? No. So why deterioration or the problem was not happening at that time to this scale? इस स्केल में उस समय प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है? Because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start Ashtang Chikitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, तो इसका मतलब body as well as mind. Because in Kumbhak Paddhati, in Kumbhak Kalachar or Ayurveda Kalachar, in Yoga Kalachar, there is nothing called as mind separately. It's always Sharira. Both body and mind complex is called as Sharira. मैं एक एग्जांपल दूं आपको. लेट्स टेक एग्जांपल. ओपन योर माउथ एंड ट्राई टू थिंक. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. ओपन योर माउथ एंड ट्राई टू थिंक. Oh, it becomes difficult. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा. And just a little bit, if you know how it works, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं. You just catch it then and there. तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे. So is your action and your mind different? Is your body and mind different? No, it is not different. ये अलग नहीं. So your body and mind complex constantly strives to live. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के. हाँ या ना? So there is something called as Prakriti, new cellular formation. नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं. And there is another aspect called Vikrati. Lot of cells which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं. After a certain time period, certain age, they wear off.
This is wearing off is called as Vikriti and production is called as Prakriti. Right? ये दो चीज हमेशा चल रही है. There has to be a balance of these two things. Manufacturing and release. ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए. Now, I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I'm saying. बहुत सारे example लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं. ये these are things you know already, but you are not paying attention to your body. आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका. So when there is a polluted area, you enter a polluted area. एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं. If you watch your breath, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे, what happens more, inhalation or exhalation? जरा सोचिए, please think about it because your body is the primary responsibility. क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं, ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ज्यादा छोड़ते हैं आप, लेना नहीं चाहते आप. Your body doesn't want to. अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है. You don't take in, you try to exhale more. If you get tired, अगर आप थक जाते हैं, what is tiredness? थकना क्या हुआ? Lot of toxins in the body, isn't it? What do? You do long exhalation. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर holiday के लिए आप hill station में गए, what happens more, inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही situation मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more. आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी humanity. I'm just talking about humanity. I'm just saying it in that way. हमने क्या किया वातावरण का? खराब कर दिया. Do you think your body wants to inhale more or exhale more? It wants to inhale less and exhale more. So is construction happening more or destruction happening more? Lot of destruction, no construction. So आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बन तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी. What kind of food you are eating? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? Genetically modified food, isn't it? Your body doesn't want to take it. लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है. Your body pukes it out also sometimes. वो बाहर निकालना चाहता है. It doesn't want to take in. So regeneration will happen more or degeneration will happen more? Degeneration will happen more and correlated with the situation. इसीलिए आपके joints घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है. Regeneration नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं. So there is an imbalance of Prakriti and Vikriti. इसका बैलेंस होना चाहिए था मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है. So ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, there is no chance of recovery. So what are you doing to create a balance of these two things? You are not doing anything. तो अपना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? First of all, so this is the first thing that we need to get to: a balance of Prakriti and Vikriti, a balance of regeneration and degeneration, and there is a method to do it. इसका एक तरीका है करने का. अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, what do you do? Somebody is hitting you, कोई आपको मार रहा है, you feel damage ना, you think there will be a damage. What do? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को. You hold your breath and tense your body, isn't it? Yes or no? आप जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है. Whatever I am saying, you know it already. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना. अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, if you are watching a horror movie, there are certain scenes that you don't want to watch. देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे. एक बच्चे को देखो. See a kid, the kid will close the eyes. So you hold your senses also to protect yourself. अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस. You hold your breath.
If there is a bad sound, you close your ears. आप नहीं सुनना चाहते इसको. You hold your senses. So holding your breath, holding your senses is called as kumbhak. इसको नाम दे रहे हैं हम. So it is not just breath hold. It is the hold of senses also. आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, all the five senses. You hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more Prakriti and balance out the Vikrati. You can't stop Vikrati. देखिए आप degeneration stop नहीं कर सकते. This is a natural process of life. You will age, but you must age gracefully. ठीक है, तो how to balance Vikrati? There is a method to balance Vikrati. Ashtaang Chikitsa will give you that method to enhance Prakriti and balance the Vikrati. So then, next thing, when there is a regeneration, कोई नई चीज पैदा हो रही है, so it will expand, isn't it? वो फैलेगा. एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है. There is a little infant which gets born, and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya. The real word for expansion is samkhya or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार. Suppose your one hand becomes long, the other hand remains short. एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया. Will you get joint problem in one of the shoulders? आपको एक shoulder में joint problem आएगी ना? So if you have one leg a little longer than the other leg, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, so you'll get knee pain in one leg. आपके एक पांव में knee pain होगा. You'll get hip pain at one side of the hip. If your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you will get a problem. Neuro Musculoskeletal problem. अगर आपकी एक muscles खिंच गए because of uneven expansion, skin ढीली हो जाती है ना, skin becomes flabby when there is an uneven expansion. You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark? You get stretch mark because there is an uneven expansion. असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है. At muscles, at joints. आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना, वहां पे. So disalignment, if you see at this point of time, most of the people do not even walk straight. The way we are sitting, the way we are living our life, we don't even sit straight. कितने लोग सीधा बैठते हैं? You always take a backrest, isn't it? So there is always, there will be, if you don't use your body proportionately, there will be disalignment. और आपकी joint problem disalignment की वजह से भी हो सकती है. There are three basic disalignment that happens in the body. तीन basic disalignment है. नाभि, your navel can get disaligned. We call it dharan. Your chest can get disaligned. आपकी छाती डिसलाइन हो सकती है. That part is called as kaudi. And your legs can get disaligned. आपके जांघें डिसलाइन हो सकती है. That is called as nale in the local terminology. Nabhi, kaudi, nale. Now, if your nabhi, if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल diabetes बहुत हो रहा ना. आजकल diabetes बहुत हो रहा. Do you know one of the reason of diabetes is disalignment of the navel? But nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of kaudi or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica, those kind of things. So what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम करें, let's see how do we balance. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा. अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, hold your right hand over the top and try to
पुल इट, खींचने की कोशिश करें, जस्ट पुल ऑन द लेफ्ट साइड, बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें. व्हेन यू पुल, व्हाट यू डू, ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ, यस और नो? सांस रोकी आपने? इवन इफ यू हैव टू अलाइन योर सेल्फ, व्हाट इज द बेसिक की? वो कुंजी क्या है, वो चाबी क्या है? इट इज कुंभक, इट इज होल्डिंग योर ब्रेथ. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtaang Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा. You lose excess of weight. जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है, वो आपका ठीक हो जाएगा. So Sankhya Sharir, this is the second factor. Now again, if you have to align or Sankhya, if you have to correct the Sankhya, you have to use Kumbhak. Now, let's go. Let's go to the third part, Pramana. Now, one more thing in Samkhya, what I want to actually tell you that there is a way of doing a movement and holding the breath. अगर आपको तरीका पता है ना, how to align, how you want to align your navel, how you want to align, how you can align your chest. अगर ये तरीका पता है ना, then only you will be able to align. So it needs a little commitment. एक थोड़ा committed atmosphere चाहिए होता है उसके लिए. That is why we teach it in the class. हम क्लास में सिखाते हैं. Now the fourth aspect, प्रमाण शरीर, प्रकृति, विकृति, संख्या, प्रमाण. चौथे पे आ गए हम, प्रमाण. प्रमाण means density. इसका मतलब होता है density, गुरुत्व, भार, density. इसी को धातु भी कहते हैं. We call it धातु. There are different types of tissue in your body, isn't it? आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं. Like bone is very much dense. हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है. Your muscles is less denser than your bone. आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें. और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, your fat muscle, your fat tissue or adipose tissue is very light compared to the muscles and bones. जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है. People who have denser bones and muscles, their weight is high even though they are lean. वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है. So there are different kinds of tissues. This is called as सप्त धातु. 7 different density tissue की है आपके शरीर में. There are 7 different densities, tissue of different densities. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. These are 7 densities. ये अलग अलग भार के tissues हैं. If the densities becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी organs हैं, heart, liver, lungs, kidney, ये जितने भी organs हैं ना, इनको काम करने के लिए there is a density required. So we are losing on the density of our organ. हमारी organ weak हो रही है. What is diabetes? Your pancreas is not functioning properly. Your liver is not functioning properly. What is hypothyroidism? Your thyroid gland is not functioning properly. है ना? It has also a relation with liver. What is kidney disease? Your kidney is not functioning properly. Organ damage आजकल ज्यादा है. You will see more chronic disease are there. है ना? Organ से related disease. So how do you correct your organ? Suppose there is a joint pain due to liver dysfunction. Liver के कारण आपके शरीर में joint pain है, inflammation. So you will have to correct the liver. आपको liver ठीक करना पड़ेगा. Is there a medicine to correct liver? No, there is no medicine to rejuvenate your organ. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को. देयर इज नो मेडिसिन. देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन. दवाई हो ही नहीं सकती है. सो यू विल हैव टू वर्क इंटरनली. आपको अंदर काम करना पड़ेगा. अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं. यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू वेट ट्रेनिंग, इजंट इट? बट पीपल इनटू स्पोर्ट्स एंड वेट ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज, दे आल्सो गेट डायबिटीज, दे आल्सो गेट हार्ट अटैक. 40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है. एक्सरसाइज कैन नॉट रिजुविनेट योर ऑर्गन. एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला. सो हाउ विल इट हैपन? ये होगा कैसे? शुड वी डू ए लिटिल एक्सपेरिमेंट? एक एक्सपेरिमेंट करें.
नाउ कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस, अपने बाएं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से, मेक अ फिस्ट फ्रॉम द राइट हैंड, कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस एंड ट्राई टू पुश योर लेफ्ट पाम वेरी हार्ड। जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को, पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए। हाउ डू यू क्रिएट दिस स्ट्रेंथ ऑफ पुशिंग? ये जो शक्ति आप क्रिएट कर रहे हैं, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ, यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ बिहाइंड। करके देखिए दोबारा, अगेन डू इट अगेन, सी, पुश इट हार्ड, यू होल्ड योर ब्रेथ, सांस रोकते हैं आप, बट सांस रोक के बाय होल्डिंग द ब्रेथ वेयर आर यू क्रिएटिंग द ट्रिगर? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? यहां पे कर रहे हैं एफर्ट, बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना, यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट। बाय होल्डिंग योर ब्रेथ यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट। सो व्हेन यू लिफ्ट समथिंग, तो ये भार आप उठाते हैं, so how do you lift weight? Weight कैसे lift करते हैं? You hold your breath. You can't lift weight without holding your breath. You hold your breath and when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से weight उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles. दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong. Your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है ना. This is how weight training and bodybuilding happens, isn't it? So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे इसको. तो कहां जाएगा ये? डायरेक्शन कहां जाएगा? Internally. Your heart rate will increase. आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी शरीर. You start sweating after some time. पसीना आ जाएगा. Where did the trigger go? Inside. So by breath hold, you can create an internal trigger. Can you direct it towards your heart, towards your liver, towards your kidney, towards your thyroid, towards the other organ and make it strong? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए. How you made one hand more stronger than the other? एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? Because you worked with that hand more, isn't it? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. And how did you work? Breath hold and direction. Breath hold and direction. That hand became strong. So if you do breath hold and direction inside, that organ will become strong. This is the only way. There is no other way. So how you can rejuvenate your liver? How you can make your liver strong? How you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtaang Chikitsa. So how do you correct the Pramana Sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है? तो और दूसरा तरीका, there is no medicine for that. कोई दवाई नहीं है उसके लिए. And there cannot be a medicine. कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you, for youngsters also. छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? आपका heart, आपके muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live. If you take out liver, you will not be able to live. So they all work together. So there are junctions. ऐसी जगह है जहां पे की movement होती है. There are junctions. Muscle and nerve junction. Muscle and bone junction. Two bones and there is a junction. ऐसा ही है ना? दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. Organ, आपकी आंतों के बीच में. Lungs, organs and the external body is connected. ये सब जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो junction point है, this junction point of the various organs is called as marma. If this junction point is okay, lubricated and flexible, you can perform better. अगर ये junction point ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से movement कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक movement ठीक से होगा. Your organ function will happen properly. So these are called marmas.
So marma needs a constant rejuvenation. इनको कॉन्स्टेंटली एक तरीके से मूवमेंट देना पड़ता है. टू कीप इट फाइन वी नीड टू एक्चुअली make them move in a particular way constantly. For example, I'm giving you another example. If your marmas are not functioning properly, there are two kinds of circulatory movement in your body. आपके शरीर में दो तरीके का मूवमेंट का, blood circulation and lymph circulation. ऐसे मान के चलिए, just think about it, there are tissues and cells. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना waste छोड़ देते हैं. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे कटकाते हैं तो आवाज आती है ना? If you just tense the joints, there will be a sound. टक से आवाज आएगी ना? क्या हुआ? Gases release हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना movement के नहीं होगा. Blood circulation can happen without movement because there is a pumping organ. एक heart है जो blood circulation करवा रहा है. Lymph का कोई circulation नहीं करवा रहा. It will only happen by movement of the body. So if you move the body in a particular way, these toxins they go out of the body. There is a constant rejuvenation of cells. Internal environment साफ बनेगा आपका, तभी there will be प्रकृति, न्यू सेल्यूलर फॉर्म, बेटर सेल्यूलर फॉर्मेशन. अगर वो एनवायरमेंट ठीक नहीं होगा तो रॉन्ग सेल्यूलर फॉर्मेशन कॉल्ड, एंड दिस इज कॉल्ड एज कैंसर. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. सो बिकॉज ऑफ एन इंटरनल एनवायरमेंट, कैंसर हैपेंस बिकॉज ऑफ अ कैंसरस एनवायरमेंट. और उसके लिए इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट, देन देयर शुड बी कांस्टेंट रिजुवेनेशन ऑफ मर्म. तो इसमें हम Marma Ashtanga Chikitsa mein, there is a part in Ashtanga Chikitsa, there is a part called as Anganyasa and Marma Vinyasa, which actually works upon, there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of Ashtanga Chikitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now tissues, organ, joint, marma, सब कुछ तैयार हो गया. Now you function, you live your life, you do movement, you do function. काम होता है ना. तो फंक्शन, देयर आर थ्री थिंग्स व्हिच आर अटैच्ड टू फंक्शन. तीन चीजें हैं फंक्शन के साथ में जुड़ी, मटेरियल, एनर्जी एंड मूवमेंट. फंक्शन मींस थ्री थिंग्स, मटेरियल, एनर्जी एंड डायनामिज्म. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. दिस यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी. So everybody is educated. You know, at least you must have heard of these words called Vata, Pitta, Kapha. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea. But material, energy and dynamism, Kapha, Pitta, Vata. Most of the problem is attributed to dynamism. वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. सो व्हाट इज योर जॉइंट प्रॉब्लम? व्हाट इज इट कॉल्ड एज? वात दोष. राइट? मूवमेंट को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? व्हाट इज वात? मूवमेंट. वात ऑल्सो क्रिएट्स पेन. सो मूवमेंट, हाउ डू यू कंट्रोल मूवमेंट? इफ यू वांट टू मूव योर हैंड, हाउ डू यू कंट्रोल द मूवमेंट? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाए, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए, हाउ डू यू कंट्रोल दिस मूवमेंट? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ इन अ पर्टिकुलर मैनर. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए. यस और नो? यू कंट्रोल योर मूवमेंट बाय होल्डिंग योर ब्रेथ. विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ यू कैन नॉट कंट्रोल योर मूवमेंट. तो वात दोष से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of Vata dosh, what you need to do is control your movement. कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary, you'll get a joint pain relief. Temporary, it's little temporary. क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen.
So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice kumbhak. कोई और चारा है नहीं. So dosha sharir ko, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do vata pitta kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be cure, rejuvenation. If you do kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So neuro problem, usually कहते हैं neuro problem. Somebody was talking about so what people were talking about, spondylitis and what else? Neuro problem. Now something called as drop foot, neuropathy, है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things. So neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. There is degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't. No, there is no solution for that. There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. A 65-year-old professor of Delhi University or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There is a marathon runner. She's a lady, एक lady marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, उसका marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पड़कती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started kumbhak, and in 3 months' time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85%. It's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words. He was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro origin. So he started kumbhak. In 4 to 5 months time, he said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता था. So these are examples of people who have done kumbhak, and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis, and neuropathy. You can actually revive. Your whole nervous system can revive. Let's get to the second last part, or the 7th Sharira. It is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality. So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality.
for the quality of your body. How much your body has potential in what direction, in what vertical. It is your genetics, isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now, the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now burst, is now being bursted. So now you can change your genetics also. If the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I am telling you, Kumbhak is a way to change genetics. When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People of who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say or what is being said in the world today can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है. So the water around her is सृष्टि for her. So for human being, the cosmos, ये ब्रह्मांड is सृष्टि. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. Atmosphere का pressure है ना आपके ऊपर. उसके बावजूद भी आप move करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? Gravity तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे gravity के विरुद्ध. आप जानते भी नहीं हैं. You don't even know, notice. But you are applying a force opposite to gravity. Suppose कीजिए आपके अंदर this force becomes weak inside you. Gravity के opposite force लगाना कमजोर हो गया. आपको कैसा feel होगा? How will you feel in your body and mind? You will feel heavy, pulled by gravity. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. You will not feel light. How will you feel? Heavy. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे heavy feel करेंगे. Where will the heaviness impact? ये heaviness कहां असर करेगा आपके? Joint पे? It will impact the joint? Yes or no? This heaviness is called as stress. S-T-R-E-S-S. You talk about stress, but आपको मालूम नहीं है stress क्या है. You think situation creates stress. No. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें स्ट्रेस होगा. So are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So I talked about one force.
एक फोर्स के बारे में बात किया. द अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड उदाना. इन कुंभक कलाचार, इन कुंभक विज्ञान, वी कॉल इट उदाना. इसको हम उदान कहते हैं. हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. दिस हैज कम फ्रॉम द रूट उदाना. दैट मीन्स opposite to gravity force. There are 84 forces which you are struggling every moment from through. 84 अलग अलग फोर्सेस में आप काम करते हैं. Your organ function according to these forces. So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा फोर्स वीक हो गया जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ गए? That is what we diagnose in प्राण शक्ति डायग्नोसिस. यही प्राण शक्ति डायग्नोसिस है. We find out the force which has become weak in you, and because of that you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do prana shakti diagnosis, and in the 9 weeks you learn the basic module, and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक मॉड्यूल सीखते हैं. There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as अंगन्यास. The second one is called as hatha vinyasa. The third one is called as kumbhak therapy. So in 9 weeks you learn this module of 3 steps, and then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtaang Chikitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex. Prakriti, Vikrati, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti. And it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you will not get a magic pill. कोई magic दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? ये common sense कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं? That is why more medicine, more disease in the last 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this. Body is magical. Let me give you this guarantee. ये शरीर बहुत मैजिकल है. ये ठीक करता है अपने आप को. This is the only gadget which is self-corrective, or it corrects itself. ये खुद को ठीक करता है. आप मौका दें इसको. You empower your system and you'll see magic happening in your life. So it is important, wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई? वो आपको रूल करने लग गए. आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए. जस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड you'll see your health will improve. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with, and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे. Thank you so much, Anilji, for sharing the program details. Now I would request Sarala ma'am, one of our participants of Ashtaang Chikitsa, to please share her journey in Ashtaang Chikitsa. Sarala ma'am, are you able to hear me? Yes, namaste, and thank you for joining us in the webinar. Okay, thank you, ma'am. Please, yeah. I am Mrs. Sarla, 64 years of age, and I actually joined the webinar because of the enthusiasm, what it is. I want to know what it is.
So first I attended the webinar and then thought of joining the class. But this December I joined, and last 3 months the journey was beautiful. I enjoyed every practice sessions, every workshops, whatever has been given by the Avisha group. And I mainly joined because of my pain. Many part of my body has got pain. Though I was doing yoga and all, this pain was not going. So I thought I will join this Ashtaang Chikitsa and see the result. And the result was very encouraging. Most of the pain, around 80-85% has gone. Something has left. I think by doing or continuing this treatment, I will be able to overcome all these things. And I'm really enjoying these sessions. So thank you very much for Swamiji and all the mentors. They have done so much for us, and I will continue doing it. Thank you, ma'am. Thank you so much, Sarla ma'am. All the results of your dedication. Over to Lokesh, sir. He's another participant. Lokesh, sir, you need to unmute yourself, please. Okay. Yes, now we can hear you. Okay. Thank you. Namaste all. Sir Gurubhyo Namaha. Just my name is Lokaya. I am ex-army, retired. Okay. I am participant of Kumbhak therapy, Ashtanga Chikitsa from last 1.5 months. Okay. I used to do physical activities, yoga, pranayama, meditation and all in the previous. But after joining this Kumbhak therapy, I came to know how we are doing, why we are doing, what is the benefits, how technically I came to know many things. Every session is a superb, and every session has some secrets which I came to know. It is the most beneficial. So then Swamiji and their team is very nice, and everything, how patiently they are handling. I cannot believe that much patiently they are handling and everything going on. Main name is Swamiji, and this team is our body should be without medicine and without chemical. How we have to work. There is some network issue, Lokesh, sir. That's why we're not able to hear you. Their aim is to be our being of human beings. The great they have doing is most important, and this and benefit out of it. Okay. Now. Yeah, now I'm Hello? able to hear you. Now? Now we are able to hear you. Now it's okay. Yes, sir. Now it's okay. Okay. After within a few days, what is the benefits I got? Actually had problems of knee pain and ligament tear and gastric weight gains and lifestyle. This is my problems. Then after joining this one, within a few days, listen this, within a few days, I got this detoxification and releasing of gases, everything. Till now it is happening. Till now, detoxification, gases released, everything happening. Very correct, very correct. My main now knee pain is reduced. Almost all 60% knee pain has reduced. Previously, I was not able. Now I can sit and fold my legs. The weight loss, around within a month, the weight loss, 2 kgs weight loss, and 2 inches, 3 inches waist size also reduced. This is a major energy level, strength, and all improved. Energy also improved. Previously, I am going 12 hours duty and coming energy level. After that, 7 hours, 8 hours sleeping. Now what happened? I will sleep, sound sleep. Within 2-3 minutes, I will get sleep, good sleep. And 2-3 hours, I will get good energy. After that, I will come. Then day-to-day activities and all, so smooth. And my friends, everyone is noticing, sir, from last one. And mainly in our family also, we have army person, something we have in mind. That is
important. Lokesh sir, Now again there my is some calmness, net issues. We are that not and all able to improved. hear properly. Everyone is noting sound. You are calm and quiet, and what is happening? Why you are like this? This is Kumbhak therapy, because Kumbhak therapy technically it is on. Hello. Thank you so This much, is the same Lokesh place. sir. Hello. Now Yeah. okay. Yes, sir, it's breaking in between. So it's okay, no problem, sir. You joined us for the webinar. That in itself is pleasing. Okay, Okay. over to Anil ji for the program details. Yes, just give me 2 seconds. I'll share my screen. Rashnaji, can you see my screen? Yes. Okay. So let's get to know the program details, as a lot of you may be waiting for it. It's a guided program conducted online by Kumbhak mentors. This is not to be done alone. That's why we have mentors who will guide you throughout the program. There are 3 modules in the program: module 1, module 2, and module 3. Why 3 modules? Because like the program name, Ashtaang Chikitsa, Ashtaang means 8. The body needs to be balanced in 8 aspects, balanced and corrected. So there are 3 modules for various, the various 8 levels that the balancing has to be done. So each module is of 21 days of duration. So total duration would be 63 days. Like it says 63 days means 9 weeks, but since there's a customization also which happens in that 10th week, so that's why the total duration would be 10 weeks. And there'll be 2 live classes every week. One will be a learning class and one would be a mentoring class or the practice class, in which the mentors will be watching you on camera and making, they'll be correcting you if you're not doing the kriyas correctly. So that way you'll be able to do it alone on the remaining 5 days of the week. And all the classes will be recorded. So everyone gets a login ID and password to access all those videos, the recorded videos, and the instructions, the written instructions, so that you can download and even take a printout for daily kriya that you'll be doing. Now, what are the next steps? You make a fee payment, the program fee, and there's a very special webinar special fee we'll be announcing just now. And then you provide your details to get login so that we can create login credential for the course access, where the recorded videos are stored. And then you join the program and start with module 1. After that, module 2 and module 3, you'll be completing all 3. Total classes, again, in module 1, 6 classes, out of which 3 are learning classes or the main classes, and 3 are mentoring class or the practice class. So total, you'll get 18 classes, plus there'll be 2 extra classes for customization. I'll just tell you about in a short while what customization means. And then engagement total comes to 10 weeks. These are the start dates. We'll be starting the 59th batch. There are more than 500 participants who are already, either they have completed their program or they are still doing the program. So this is the 59th batch that will be starting from 7th March, which is a Monday at 6:30 p.m. After the module 1 is completed, module will be going to module 2, which starts on 29th March. Module 3 will start on 20th April. The time remains the same. So you will be completing all 3 modules one by one. Mentor classes or the practice classes. For module 1, the main class is on Mondays. So the practice class would be on Thursdays. And when you start module 2, which will be on Tuesdays, the practice class will be on Fridays. And we'll share all these details with you so you don't have to remember. What are the class experience like? These are live sessions and where mentors watch all the participants so that they can guide them about doing the kriyas correctly. Because on the remaining 5 days, when you're not with us live, you'll be practicing alone.
So if you are corrected, if you know how to, do the kriyas correctly, and you'll get the videos also, instructions also, they'll also be helpful. But this is, since these are live sessions, so the mentors will be guiding you there and there. You'll get written instruction, there'll be session recordings, I've already told you. There'll be a lot of extra things that we'll be sharing with you. There'll be mental practices, unique diet perspective. Swamiji will give you a unique diet perspective. These are, mind you, these are not diet plans. This is not a diet plan. What to eat, in what season, what to eat, why to eat. He gives the basics, and then you can go and eat anything that you like according to your lifestyle. Then there are simple detox processes, and there's a lot of knowledge that Swamiji shares with all the participants. Before coming to the program investment, I'll just note down some points wherein we could be spending this kind of money just to manage our disease or the problem or the health issue that we are into. So I've written down some numbers that may be lower or higher depending on the place where you live. So these are general figures. So doctor fees, you could be spending between 6,000 to 12,000. Physiotherapy, another 12,000 to 30,000. Then medicines, 15,000 to 30,000. So if you total all of these, you could be spending anywhere between 33 to 72,000 per year. And the side effects of allopathic treatments that we all know about. So we won't spend much time discussing on this. So I just wanted to put things in the perspective, right perspective, that what we are spending and what the program will cost will be, nothing in front of this, so that everyone can afford this. Program fees is 9,500 only for the complete 10 weeks of the program. And let's do a little math here, because many people say it's a lot, but let me put things in the right perspective. It's a 10 weeks program, which you get 20 classes. So if you divide 9,520, each class comes to just 475 rupees only. And along with a lot of other benefits. Let's see what all you get in this. The first point is a Prana Shakti diagnosis for root cause determination. This is the most important part of the therapy. If Swamiji is able to diagnose you for what caused the problem, what started the problem in the first place. This diagnosis alone could be worth 9,500, because you see, most of the therapies that are there, they don't arrive at the root cause. They'll make an intelligent guess, and then they'll do experiments on the body. They'll do one thing. If that thing doesn't work, they'll do another therapy, they'll do another treatment, and it goes on and on and on. I'm sure many of you would have faced that situation. So the Prana Shakti diagnosis to find out the root cause, what actually started. Like in the webinar, in the last video, Swamiji's video, he talked about root cause determination, and he talked about 84 forces that are there in the body. So which forces become weak, due to which you landed into your health issues. So that's Prana Shakti diagnosis. And then you get weekly one main class, 60 to 90 minutes, weekly one practice class of 60 to 90 minutes, then online course access where all the videos are stored. You have complete access for a full 1 year. So nothing to worry about. You'll be able to learn each and every Kriya exactly as it should be. Then course dashboard, inside the course dashboard, you'll get videos of all the Kriyas separately also. The recorded classes are one thing, and then all the Kriyas will be shown in individual videos. Then course dashboard, you will get written instruction. Then the 7th point is a private WhatsApp group to ask doubts, questions 7 days a week. This is where you'll get the support. You'll be interacting with the mentors on a daily basis. The group, the meeting links, the class links will be shared inside the group, inside this group. Since you'll be live with us for 2 days, on the remaining 5 days, when you're practicing alone, and if you got a doubt, you can ask in this WhatsApp group. This is a support group. Our mentors are there. Then 8th point is individual participant progress tracking. Every day we track your progress as to if you're facing any difficulty, what progress you're making, if you got a problem with any Kriya. So that is done on a daily basis. Then therapy customization for each participant in the 9th week. This is very important. This is dependent on the root cause determination.
This is where the therapy will be fine-tuned and customized for all the participants separately. So it's a customized practice because everybody is different. So we need to take everybody, we need to treat everybody as a separate entity. And that's why customization is required. So when the customization is done and you keep on doing those customized practices, the recovery happens very fast because you are addressing the root cause. And then the 10th point is we keep in touch even after the program is over. What does it mean? It means you'll be shifted to a old students group or the alumni group when you complete your 10 weeks, which means you'll still be able to ask questions even after the program is over. And this is the only program that offers support throughout. So these are the some points, and then I wanted to let you know what all you get. And it will give you confidence also as to that you'll be learning properly and with ease. There's a special webinar pricing for all the people who are still here. You can take advantage of this. This is the normal fees 9,500, but it's been reduced to 5,500 so that most of the people can afford it. And this price is available till 5th March. That is day after till 12:30 p.m. And again, I've done some math here. If you divide 10 weeks program by 20 classes, and if you divide 5,500 by 20, just 275 rupees per class with all the benefits that I showed you. How to enroll? You pay the program fee, then you post the payment receipt in the WhatsApp group, then you submit your details so that we can create an access course dashboard for you. You join the first module and start attending the classes. These are the payment details we'll share in the chat as well as in the WhatsApp group also. Now the support team, I'd just like to stop here for some time and let you know there's the proper team here. We have Rachna Shrival Bothra, she is the program director and she is the host of the webinar today. Shalini Bhagwat, she is the another mentor. Atul Sharma, mentor. Pooja Chopra, another mentor. Randana Swam, another mentor. So you see, we've got lots of mentors, which means that each and every participant will be taken care of properly. No one will be left, and you won't feel lost inside the program. We understand that it's an online program, and many people think how we'll be learning because we are used to learning, face to face at a physical location. But since we've got more than 500 participants who range between 25 years from 25 years till 75 years of age also. So we take care of all the people because we have a proper team in place. We have Neha Upadhyay, she takes care of the enrollments. Then Anil Chauhan, that's me. After the webinar, if you've got questions, you'll be asking in the WhatsApp group and I'll be the one who will answer them. Then we have Himanshu Reddy. He takes care of all the technical things like your course login ID and password. He'll be the person that you'll be talking to if you're facing any difficulty in your videos, if you're not able to download your PDF for the instructions. So the proper team is there which will take care of every aspect of your program and will handhold you. And that's why I want to give you confidence that you're in the right place. So be assured, we'll take you step by step and get you out of your problems, your health issues. With that, I come to the end of my presentation and I hand over the presentation back to Rachna ji. Thank you so much, Anji. Now we will be taking up the questions. Swami Raj Vibhuji has already joined. So I'll just put him on spotlight. Namaste, Swami ji. Okay, so I'll just be reading out the questions and people who have raised their hands, we can take your questions also. Okay, Kanan ma'am asks, what if due to surgery they removed 18 lymph nodes? What if they have removed 18 lymph nodes or you have removed 18 lymph nodes?
See, lymphatic system is the second circulatory system of your body. It helps in the detox aspect of your body. The cellular waste is thrown out of the cell wall. They deposit in the intercellular spaces, and through the movement, it just goes to lymph node or a greater place, or basically they are joints. So joints also accumulate toxins. That is why if your detox aspect is not strong, then joint pain is pretty common. So if the nodes are removed, then what? Still the lymphatic system will work. Because of some deposition, those are removed. Those depositions are removed. The channels cannot be removed. So water can be removed, but a river cannot be removed. नहीं? So नदी का कचरा तो आप निकाल सकते हैं, नदी कैसे हटाएंगे? River is just a flow, is just a space. आप बंद कर दीजिए वो जगह बंद कर. What will happen? The water will take another direction, another path. दूसरा रास्ता ले लेगा ना. So detox will still happen, but the thing is, the integrity, the integral force of detox mechanism suffers due to this. आपका शरीर जो है ना, इसमें आप if you do any surgical intervention, then it suffers because the integrity of the whole system suffers. So any surgical intervention, unless and until it is very, very needed, should not be done. And also surgery needs to evolve. Surgery जो है ना, वो भी अभी evolve होना चाहिए. We need to understand what are marma points of the body. And looking at the marma points, if you do the surgery, then surgery will be more successful. First of all, it will not create that much damage to the integrity of human body. At present, surgery is doing a lot of damage to the integrity of the human system. And that is why even after surgery, there is no solution as such. Then what to do? What to do? Your body needs a little help. Detox करने में इसको थोड़ा help चाहिए. You do it with that, or you give your body that help. So first of all, those mechanisms which suffered needs to be enhanced. That will happen only if you work upon your body. There is no other way. कोई और दूसरा तरीका नहीं है. So Ashtaang Chikitsa will help you greatly. बहुत ज़्यादा आपकी मदद कर. Pratibha ma'am asks, I feel pain on my shoulders only in winters when either wear jackets or too many layers of woolens. Okay. Now, when you look at a problem, the problem may not be local all the time. So shoulder, basically, when you say shoulders are associated what is called as Deha Bala. There are 6 basic strengths in your body. The first strength is called as Deha Bala. Dosha Bala, second. Dhatu Bala. Agni Bala. Mano Bala. Ojas Bala. There are 6 different layers of strength of this human system. Now, shoulders are directly associated with Deha Bala. Shoulders are associated with Deha Bala. The another thing which is associated with Deha Bala is your thighs. आपकी जांघें और आपके कंधे देह बल से associated है. अच्छा, आपने कभी बुल फाइट देखा है? Have you ever seen in the movie at least? हाँ, मूवी में देखा आपने? वो रोमन कल्चर में बड़ा बुल फाइट करवाते थे. If you see those bulls, अगर उन bulls को देखें आप, तो they have very, very broad shoulders. Shoulders बहुत broad है. So their physical strength is huge. उनका physical strength बहुत ज्यादा होता है. So देह बल has become weak. अगर आपका देह बल कमजोर हो जाएगा, तो your shoulders will suffer. With a little weight, you'll not be able to actually be comfortable. So this is, you'll lose also the resilience of this body. शरीर का resilience, किसी चीज को सहने की क्षमता. What you can bear, what you can't. So if you can't bear many things, then what will happen? Your mind will be agitated all the time.
The second thing that will happen is you will develop allergies to various products, not only products, to various condition, situation, even people. So we are almost like everyone has developed this. Everyone has this to different extent. हर एक के साथ में ना ये किसी तरीके से परेशानी जो है फिजिकल और मेंटल ये बहुत ज्यादा है. The resilience, the strength of the body has come down. Immunity also has gone down. And that is why you see even with a little viral infection, it creates havoc in the whole world. एक छोटा सा वायरल इन्फेक्शन पूरी दुनिया में हाहाकार मचा देता है. So corona is not a very dready or deadly disease. सर्दी जुकाम जैसा है, लेकिन देखिए क्या किया इसने. It is not corona's fault. वो कोरोना की गलती नहीं है, वो हमारी गलती है. मानवता ने अपना रेजिलियंस, अपनी स्ट्रेंथ खो दिया. And why it happened? It happened because just look at your lifestyle. You are trying to fix this human body through chemical bombs. Chemical bomb डाल के तो ये human body ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं from the time you are born. So obviously we are not giving an opportunity, or we are not strengthening those factors which creates body function. तो अगर आप देह बल नहीं लेके आएंगे तो shoulders का कोई इलाज नहीं है. The second thing that will happen is slowly you can develop frozen shoulder, cervical. ये area जो है आपका बड़ा impacted होगा because of the tendency. Some people have a tendency of a problem in the lower part of the body. Some people have upper part of the body, and some have middle. तो देह बल तो लेके आना पड़ेगा. How to develop देह बल? Now the solution. How to develop देह बल? Can you develop it by medicine? दवाई खा के develop हो जाएगा? कभी नहीं होने वाला. So can you develop it through food? अब तो भोजन बहुत अच्छा खा रहे हैं ना. Even if you remember your grandfather, grandmother, what kind of food they were eating and what kind of food you are eating in terms of variety. In terms of variety, you are eating a lot. More people are getting into difficulty not because they are starving. भूख से कोई नहीं मर रहा आज के टाइम पे, खाने से मर रहा है. So why you are not becoming very strong? You are eating food, so by food you will not become strong. Through medicine, obviously, you will not only destroy yourself, you will destroy the whole future and generation. Then what is the next option? Exercise. Now you are not strong enough to do exercise. A little load and you will fizzle off. Exercise करने के लिए भी तो जान चाहिए. And exercise will not work on your heart. It will not create the strength of your heart. है ना? Exercise करने वाले heart attack से मरते हैं ना? They get into diabetes. Organ strength will not happen through exercise. It is good that you do use your body a lot, but organ strength will not happen. It is only kumbhak which will strengthen the organ and the resilience. It will increase the deha bala. The program is designed in such a way that it increases all the 6 balas. So after doing it for a few months, you'll see suddenly you'll be able to do a lot of work. And this is the first thing that people experience the moment they start Ashtaang Chikitsa. They feel a lot of energy. They want to work a lot, use their body a lot. बहुत energy आती है. So please help your body. It needs help at this point of time. उसको chemically bombard करके और ठीक कर नहीं सकते हैं. किसी जगह को आप bombard कर दो and then say कि और bombard करके इसको ठीक कर देते हैं. Now what is this kind of logic we have come up to? It will never happen. So please help this body, and you'll see your dependency on medicine will also drastically reduce. And after some time, if you do it for some time, people take a different amount of time. But what I'll say, if you do it for 6 months, your whole life will change. तो इस वक्त मदद की जरूरत है आपके शरीर को, उसको मदद कीजिए. Next. Dr. Monica Sharma says ringing sound in the head always and pain in the back of the head. So ringing sound. Now, as I talked about bala, 6 balas. This is the second bala. This is called as dosha bala. The whole Ayurveda is based on the principle of dosha bala. So dosha bala is fundamentally what you can call as the balance of your body. It is also in modern terminology known as homeostasis. If the balancing factor of your body needs basically 3 things: strength,
बैलेंस एंड रिदम। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं जो भी यहाँ पे अभी तक है, सो इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, you know, our country is named, our country's name is indicative of health. Now rhythm creates something called as bhava. Balance creates something called as raga. And strength creates tala. If you combine the first word of all these three words, bhava, raga, tala, bharat, bharat. आपको यहाँ पे कोडिफाई करके बताया गया कि हाउ टू अचीव हेल्थ. योर कंट्रीज नेम indicates health. So you will have to bring back these three factors of your body at least: strength, balance, and rhythm. Now the balancing factor and the rhythm actually goes hand in hand. Balancing factor and rhythm goes hand in hand. If you don't have balance, you can't have rhythm. Now disalignment of the body is pretty common. We are dealing with neuro musculoskeletal. These are also three things. Now your issue is at the neuro level. आपका इशू कहाँ है? नस के लेवल पे, नर्व्स के लेवल पे. Nerves need a rhythmic energy to function better, and it also needs a balance. तो ये क्या दोष है? अगर if you talk, I'm just giving you a little glimpse of what in this culture we have created. Your nerves is related to something called as kapha dosha. Your muscle problem is related with something called as pitta dosha, and your bones are related with vata dosha. Now, not this simplistic. They can be there. They can combine together because these all things work in an integral manner. Bones doesn't work without muscles, and muscle doesn't work without your nervous system. So these work together. So there is a amalgamation of these three factors. But primarily, we can see what factor has gone wrong. The kapha factor. Now, I can describe it in a different manner also. Kapha dosh, if the heat factor or the metabolic factor of your body goes down, you can get into nervous problem very easily. So metabolic factor and the issue of nerve is somewhere correlated. It is also correlated with other things. I'm talking specifically in your terms. So if you increase the metabolism of your body, the nerves will start rejuvenating. Okay, so I'm correlating things which are far off, बहुत दूर दूर हैं, but nobody is really correlating them. The current form of therapy or treatment, modern allopathic treatment, doesn't observe life in a very, very comprehensive manner. इसीलिए they don't have a solution. उनको nerve का issue का कोई solution ही नहीं. If they give medicine, it will become worse. So first of all, improve the metabolic factor. You'll see a rejuvenation of your nerve will start happening. The second thing, if you become weak, you pick up a glass of water, your hands will shiver. So correlating it with the weakness, metabolism will give rise to energy. Energy will also create a stability in the body. So this movement or fluctuation will slow down. Apart from rejuvenation of nerve, if you get a little strength, the fluctuation will slowly go off. So rejuvenation and strength, if you combine these two things, suddenly you'll see that not only in ears, it is happening in the ears, tinnitus, it is happening in the ears. It happens on the level of your cheek. It happens on cheek. It is called as myasthenia gravis. It happens on foot. It is called as drop foot. It happens on the other part of the body. It is called as some kind of a nerve dystrophy or degeneration of nerve. Parkinson. It is called as Parkinson. So giving a terminology to a problem doesn't solve a problem. You must get it. किसी का नामकरण संस्कार कर दो ना तो उससे उसकी क्वालिटी नहीं बिल्ड हो जाती. The modern medical science is just doing नामकरण संस्कार. They are not giving solution to any damn thing.
इन्फेक्शन को छोड़ के मुझे एक डिजीज बता दो जिसका सोल्यूशन है। 80% ऑफ द प्रॉब्लम डजंट हैव अ सोल्यूशन। डायबिटीज से कोई भी एक इंसान दवाई से निकला, हार्ट डिजीज ब्लड प्रेशर से एक भी इंसान निकला, अस्थमा से, आर्थराइटिस से, ऑस्टियोपोरोसिस से, हार्ट अटैक, कैंसर, मेंटल इश्यूज बता दीजिए। तो कहीं तो आंखें खोलनी पड़ेंगी आपको। सो योर बॉडी इज मैजिक। इन द नेम ऑफ साइंस इफ वी आर डिस्ट्रॉइंग द होल ह्यूमन बॉडी। अब मुझे एक बात बताइए, जमीन पे फर्टिलाइजर यूज किया ना तो जमीन खराब हो गई। अब क्या कह रहे हैं, सेव द सॉइल, ऑर्गेनिक खेती करो, जैविक खेती करो। आपने इसके ऊपर कितना बॉम्बार्डिंग किया केमिकल, कितना खाद इस्तेमाल किया इस बॉडी के पे, ऑब्वियसली खराब हो गया। तो इसकी ऑर्गेनिक खेती कब शुरू करना? सेव द बॉडी, सेव द ह्यूमन बॉडी कब शुरू करना? यू कैन सेव वाटर, यू कैन सेव वाइल्ड लाइफ, यू कैन सेव एनीथिंग एल्स, बट इट विल टेक टाइम। जमीन रिवाइव करने जाओ 200 साल लग जाएगा, फॉरेस्ट रिवाइव करो 200 साल लग जाएगा, और उतने में तो बॉडी बचेगी नहीं। सो फर्स्ट सेव द बॉडी एंड देन समथिंग एल्स। तो देयर आर सॉल्यूशन, बट यू विल हैव टू थिंक in a very, very organic, holistic manner. Only then solution will happen. Next question. Sculvy ma'am writes, how to know more about Kumbhak and how to do it in right way? How to know more about Kumbhak? Even if you know more about Kumbhak, even if you know, or even if you put the whole Google in your mind, they cannot be a solution. You will not reach to a solution. So ये थोड़ा सा ना भ्रमित हैं अभी लोग, क्योंकि बिकॉज यू हैव ऑलवेज लिसन टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। आपकी पढ़ाई भी सारी वेस्टर्न वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस है। दे डोंट हैव सोल्यूशन फॉर एनी डैम थिंग। उनके पास एक चीज का भी सोल्यूशन है, वो आपको बरगला सकते हैं, है ना। वो ऐसे देखते हैं कि भाई ये कपड़े पहनने से आपको खुशी मिलेगी। आपको खुशी ना हेल्थ से मिलती है, कपड़े पहनने से नहीं मिलती। कपड़ा पहनना हेल्थ के बाद आता है। देन यू wear any damn thing, whatever you feel comfortable in. So आपको इस भ्रम से निकलना पड़ेगा। नॉलेज क्रिएट सोल्यूशन। नो, नॉलेज नेवर क्रिएटेड सोल्यूशन। यू विल हैव टू वर्क। नहीं, इफ आई नो अबाउट इट आई विल क्रिएट अ सोल्यूशन। बताओ ना। आप तो सोचते हैं कि द होल मेडिकल साइंस नोज एवरीथिंग अबाउट ह्यूमन बॉडी। गिव मी वन सोल्यूशन दे हैव क्रिएटेड। जितने लोग कोरोना में आए थे, जिन्होंने दवाई नहीं लिया वो तो बच गए, जो दवाई लिया वो तो उनका एक्सटेंड हो गया रिकवरी पीरियड, और वो चले भी गए। लता मंगेशकर तो और जी जाते, आपको मालूम है। सो मतलब कहते हैं ना कि ये इंद्रजाल बुन दिया है। भाई इंद्रजाल से निकलना तो पड़ेगा, बट यू विल हैव टू डू एफर्ट। सो इफ यू नो अबाउट कुंभक, इवन इफ यू नो अबाउट कुंभक, यू विल हैव टू डू इट टू गेट टू अ सोल्यूशन। इफ यू गेट अ सोल्यूशन यू विल नो अबाउट कुंभक, यस और नो। तो एक बार प्रैक्टिस आप शुरू करेंगे ना, यू नो अबाउट इट। कुंभक इज अ ह्यूज साइंस। इतना बड़ा साइंस है कि मैं आपको एक बार में बता नहीं सकता। इट विल टेक मेनी मेनी लाइफ टाइम्स टू अंडरस्टैंड कुंभक, बिकॉज दिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ। जीवन का जो मूलभूत कारण है वो कुंभक। तो याद है आपको वो बचपन की याददाश्त जो जिसने आपको झकझोर दिया था या ज्यादा इंपैक्ट किया था, आज भी याद है ना आपको? कैसे याद करके रखा है, कैसे होल्ड करके रखा है इसको? होल्डिंग इस कुंभक। आप कुंभक कर रहे हैं, आपने अपनी लाइफ को रोक के रखा वरना आप कुंभक कर रहे हैं। सो कुंभक हैपेंस ऑन सो मेनी लेवल्स। द ओरिजिन ऑफ लाइफ हैपेंस बिकॉज ऑफ कुंभक। कुंभक की वजह से ही ये जीवन हो पाता है। इट कैन क्रिएट लाइफ, इट कैन हेल्प यू टू गो आउट ऑफ लाइफ और डिसइंटीग्रेट लाइफ ऑल्सो इन द फास्टेस्ट मैनर। तो कुंभक के बारे में हमारे पास अभी टाइम नहीं है। आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग इट, लाइक यू आस्क क्वेश्चन, आई गिव अ लिटिल आंसर एंड विल स्लोली कंपाइल इट बिकॉज इट इज नॉट रिटन समवेयर। ये हमने खो दिया एक्चुअली। 1600 years of slavery, we have lost the actual science। और जो फिरंगी और दूसरे लोग हमसे चुरा चुरा के ले गए ना साइंस को, वो आज देखो कितना उसका बवाल मचाते हैं। एंड बस चुराई हुई चीज हजम नहीं होती ज्यादा। They are going toward destruction now। बट साइंस तो हमारा खून है, इंडियन प्रोड्यूस है, तो उसको निकालना तो पड़ेगा हमें। बट इट विल हैपन बिकॉज इट इज, दीज आर वास्ट साइंस, वेरी वेरी वास्ट साइंस।
we are attempting to do it. हम attempt कर रहे हैं, but we don't have that kind of a leverage of time where we can write down something. But we are sharing a lot of videos related to कुंभक. If you go to, and there are a lot of projects that we are doing. आप YouTube में जाएंगे ना तो हमारे कई कंटेंट मिल जाएंगे आपको. आगे चल के we are also planning to do broad research, not the kind of scientific research which is done. Scientific research 1 साल के लिए 2 साल के लिए करके फिर वो कहते हैं 10 साल तक ठीक रहा, 10 साल के बाद वो खराब हो जाता है. तो हमारा 15,000 years of research है, and it will take some time to compile it. नहीं, 5 साल का रिसर्च में भी बहुत टाइम लगता है. तो this is 15,000 years of research, and we have lost it. Now reviving it will take a little time. RMO to my mother has some brain issue. Doctor said it is recoverable. Now she cannot talk and understand, losing memory day by day. Aging process is natural, but what is not natural is that you become diseased because of aging. So losing the memory is not natural actually. You can age, gracefully age, but you lose the memory. That is not the case. We have created a situation where the body is not able to hold on to it. तो एक तो गलती करो फिर बोलो कि ये तो ठीक नहीं हो सकता. ऐसा कौन करता है बताइए. एक तो आपने बचपन से आपको पूछना चाहिए ना, डॉक्टर से, गवर्नमेंट से, WHO से आपको पूछना चाहिए. We followed your instruction from the very day we were born. पता नहीं कितने सारे वैक्सीन लिए, इतनी दवाइयां खाई, तो why we are not healthy at this point of time? आपको पूछना चाहिए ना क्वेश्चन. तो पूछते नहीं है. So once you create a disintegrity of human system and then say कि ये तो होता ही नहीं है, तो सजा किसको मिलनी चाहिए? अच्छा, is there a solution for it? 100% there is a solution for it. उनको नहीं मालूम तो हम क्या करें? Now they should also complete the statement. There is no solution with medicine. उनको वो solution complete नहीं करते ना. Sentence तो complete करें. Doctors are specialists of medicine, so they should complete the sentence. अच्छा, ये बीमारी मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकती. अब उन्होंने तो पूरी लाइफ का ठेका ले रखा है कि नहीं, हम बोल देंगे तो वही होगा. सो ये बीमारी मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकती. नाउ किसी और तरीके से ठीक हो सकती. बहुत तरीके ठीक करना. फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन यू रीजनरेट. और किसी ने पूछा कुंभक का एक ट्रेलर दे दो. ट्रेलर दे रहा हूं. एक ट्रेलर, छोटा सा ट्रेलर. 2 लीटर का बॉटल और सोडा बॉटल होता है ना, कोक बॉटल हो गया या पानी का बॉटल हो गया, कोई घर पे लेके आ. 2 लीटर का बॉटल उठा के उसको भरा रहने दो. विथ योर वन हैंड, दैट मीन्स कोई भी एक हाथ चूज कर लो, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड. फ्रॉम राइट हैंड पुल इट अप. उसको ऐसे ऐसे करके थोड़ा ऐसा पुल करो 100 times every day. After 10 days, what will you see? Will you see the difference in the right hand if you compare it with the left hand? स्ट्रांग हो जाएगा, थोड़ा मसल थोड़ा बिल्ड हो जाएगा, थोड़ा शेप बनेगा उसका. होता है ना. यू बिल्ड अ लिटिल मसल, रीजनरेट कर दिया आपने. इतना आसान है. कैसे किया? बॉटल से नहीं हुआ, उसके अंदर पानी से नहीं हुआ, कोल्ड ड्रिंक से नहीं हुआ. किससे हुआ? बिकॉज आपने एफर्ट लगाया. लेकिन अब रियल क्वेश्चन, हाउ डिड यू मेक एफर्ट? जब आपने उठाया था तो आपने बिहाइंड क्या किया था? आपने सांस रोका था. Otherwise, lift a weight and see how do you lift a weight? Without holding your breath, you cannot lift a weight. Without holding your breath, you cannot create balance in the body. कोई धक्का देना आपको तो बैलेंस कैसे करते हैं? आप सांस रोक लीजिएगा. आप देखो ना, आप ऑब्जर्व करो. These are all practical things. किताबों में जो लिखा है ना, जरूरी नहीं कि वो सही है. But your experience cannot be wrong. किताबें गलत बोलती हैं, मगर आपका एक्सपीरियंस कभी गलत नहीं बोलता. सो किसी को बोलो मुझे धक्का दो, आपको धक्का देता, आपको बैलेंस बनाएंगे ना, कैसे करेंगे? पीछे देखना आप बस. यू होल्ड योर ब्रेथ, क्रिएट अ बैलेंस. आप छत पे चढ़ जाओ, बहुत दूर की चीज देखने की कोशिश कीजिए.
आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स. आप बहुत दूर की चीज देखने की कोशिश कीजिए एंड जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ. आप दूर देखने की कोशिश करेंगे ना, फोकस बनाने की कोशिश करेंगे. यू होल्ड योर ब्रेथ. You hold your breath and then create focus, then create balance, then regenerate. आपने बॉटल उठाया ना, तो पीछे आपने ब्रेथ होल्ड को इस्तेमाल किया और उसका ट्रिगर, बॉटल तो केवल ट्रिगर देने का माध्यम था. कहां गया? मसल्स पे चला. मसल्स became a little big, regenerated. तो जब आपने ब्रेथ होल्ड से मसल को रिजेनरेट किया, तो आप क्या बाकी चीजें रिजेनरेट नहीं कर सकते? इफ यू डायरेक्टेड टुवर्ड्स लिवर, इट विल गेट रिजेनरेटेड. उसका तरीका है, there is a way out. If you inhale, hold and exhale very very long, it will impact your liver. आपका liver regenerate होना शुरू हो जाए. If you inhale very long, hold a little, exhale a little, इसको हम रेशियो में भी डाल सकते हैं. It will impact your kidney. आपका किडनी ठीक होना शुरू हो जाए. So there are ways and means to rejuvenate your body. You are also doing it every day. आपके खरोंच लग जाती है ना, you get a bruise, don't eat medicine, don't take medicine, any kind of medicine. Will it not become fine? क्या वो खरोंच ठीक नहीं होगी? होगी ना. तो किसने किया ठीक? आपको, आपकी बॉडी ने ठीक किया आपको. तो पहली बात गांठ बांध लीजिए, कोई भी दवाई ठीक नहीं करती आपको, आपका शरीर करता है. Any medicine, chemical or natural, they can be support, they cannot treat you. तो हम कुंभक का इस्तेमाल करें, which is your body's own mechanism. ठीक है, तो इसका कभी नुकसान नहीं हो सकता. बॉडी के मैकेनिज्म का नुकसान हो सकता है क्या? कभी नुकसान नहीं हो सकता. डाइजेशन का कोई नुकसान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. आपका वीक डाइजेशन हो सकता है, ये स्ट्रांग हो सकता है. कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता उसका. यू अंडरस्टैंड दिस? तो कुछ बाहर से खाएंगे तो साइड इफेक्ट होगा. आपकी बॉडी का सांस लेने का कोई साइड इफेक्ट होता है क्या? नहीं होता. इट कैन बी वीक और स्ट्रांग. हार्ट बीट का कोई साइड इफेक्ट होता है क्या? नो, इट कैन बी वीक और स्ट्रांग. फंक्शन, बॉडी के फंक्शन का कोई साइड इफेक्ट नो, इट इज रिक्वायर्ड. इट कैन बी वीक और स्ट्रांग. तो वही कुंभक है, इट इज योर बॉडीज ओन मैकेनिज्म. तो इसका पहली बात तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता. दूसरा, वी विल कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू ईच पर्सन्स प्रॉब्लम एंड देन इट वर्क्स प्रॉपरली. कस्टमाइजेशन जरूरी है और आपको ये सपोर्ट जरूर करना है. हम आपको बाकी किसी चीज के लिए रोक नहीं रहे. Even if you take medicine, how to be protected from the side effects or adverse reaction? If your body will be strong, it will be protected. So make your body a little strong in terms of function, strength, balance and rhythm create करें और आप देखेंगे you can come out of any damn disease, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना. So Renu Mittal ma'am writes, how can the circadian rhythm be corrected and aligned with the universal rhythm? सर्काडियन रिदम, देखो ये भी मैंने कहा ना, ये सब नामकरण संस्कार बहुत अच्छे करते हैं. सर्काडियन रिदम को कैसे, उन्होंने बताया क्यों नहीं? अगर सर्काडियन रिदम डिस्कवर कर लिया कि अरे ये तो बॉडी का रिदम होता है, वो तो नेचर के साथ में अलाइंड होना चाहिए, तो उन्होंने तरीका क्यों नहीं बताया? हमारे तो दादा दादी और नाना नानी और पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने, योगियों ने, हमारे पूर्वज ही तो है, हमारे बाप दादा ही तो है वो सारे. उन्होंने तो बताया तरीका, पर आप वो तरीका यूज नहीं करते. वो तरीका आप यूज ही नहीं करते. यू डोंट इवन यूज द एक्चुअल साइंस. जो फेक साइंस है उसको तो आप झंडा गाड़ के बोलते हो. आपको मालूम, आपके घर में बताया गया है. अगर आप अपने थोड़ा पूर्वजों को देखें ना, आपकी लिनेज में भी बताया गया है. देयर आर मेनी मेनी लेयर्स ऑन विच वी हैव एस्टैब्लिश्ड इट. लेकिन हमने तो वो व्यवस्था ही तोड़ दिया ना, वो तो व्यवस्था तोड़ दी. डू यू नो वी कैन एस्टैब्लिश सर्टेन एनर्जीज. क्या ऊर्जा की स्थापना की जाती है? वी कॉल इट प्राण प्रतिष्ठा. आपको मालूम है, अपने जरा पीछे खानदान में पीछे पूछिए जरा, हमारे कोई कुल देवी कुल देवता थे क्या? These are genetic energies which were established. जेनेटिक एनर्जी को स्टैब्लिश किया था. आप अपने जेनेटिक डिफेक्ट ठीक करते सकते थे वहां पे, क्योंकि वो रिदमिक वे में उसके साथ सिंक्रनाइज करने के लिए ही मांगता है बस. इसको इंडक्शन इफेक्ट कह सकते हैं. वो तो आपने फेंक दिया. अपने जो रिदम थे वो तो फेंक दिया आपने, है ना. जिससे आप जेनेटिक डिफेक्ट ठीक कर सकते हो उसको तो फेंक दिया आपने.
जो टेक्नोलॉजी हाईएस्ट थी किसी लाइफ को क्रिएट करने की टेक्नोलॉजी, उसको तो आप क्या मानते हैं? सुपरस्टिशन। क्योंकि वो फालतू के, ये फिरंगियों को समझ में नहीं आता, उनकी बुद्धि छोटी होती है। छोटी बुद्धि के लोगों के लिए आपने इतनी बड़ी बुद्धि का चीज खो दिया है ना। आपने बाथ वाटर के साथ में बेबी को फेंक दिया। पानी तो खराब हो गया ना, नहा के बच्चा पानी जिसमें नहाता हो तो खराब पानी है, पर आपने तो बेबी फेंक दिया। यू हैव थ्रोन बेबी विद द बाथ वाटर। फिर कह रहे हो कि इसके साथ में सिंक्रोनाइज कैसे करें। आपको मालूम है, आपके घर में हमेशा कहते हैं देयर इज अ सांध्य काल है, संध्या वंदन करो। आपको मालूम है सांध्य करना होता है, संध्या करना होता है। संध्या इज द टाइम वेयर यू कैन sync your circadian rhythm, your rhythm with the rhythm of nature. वो टाइम है, if you just utter a simple sound. Do you know Sanskrit is the only scientific language in the world? It is synchronized with nature. It is not a created language. It is a heard language. ये nature का language है. If you utter a Sanskrit, any damn Sanskrit master, for a certain period of time, at least 45 minutes in the Sandhya Kala, you will synchronize yourself with nature. और तरीके बताऊं? मैं कितने तरीके आपको बता सकता हूं। There is a whole science of it. It is called as इसको हम वैसे नाम मैं आपको बता देता हूं, यू कैन सर्च इट। शिव स्वरोदय विज्ञान। शिव स्वरो, अभी महाशिवरात्रि गई है ना। Now you think Mahashivratri, Shiva is something which is living somewhere. No, it is your own rhythm. The subtlest rhythm of life is Shiva. और महाशिवरात्रि का रात जो होता है, you can synchronize with the subtlest rhythm of nature. Because nature supports. प्रकृति आपको मदद करती है उस टाइम पे। क्या ये हमारे सिस्टम में नहीं क्रिएट किया? इट इज नथिंग। हमारे देश में कोई रिलीजन नहीं है। दिस इज द ओनली कल्चर वेयर देयर इज नो रिलीजन। मगर आज रिलीजन बना दिया ना उसको। दिस इज प्योर 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 साइंस। शिव स्वरोदय विज्ञान। आपको इतने सिंपल तरीके बताए गए थे कि आप दिन में कौन सा, इसे कहते हैं स्वर। राइट नॉस्ट्रल ब्रेथ, लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रेथ इज कॉल्ड एज स्वर। और इसको वहीं से निकला है सुर। डू यू नो व्हाट इज सुर? आप गाने में सुर जानते? व्हाट इज सुर? सुर इज रिदम विच क्रिएट्स लाइफ, इज सुर। और जो लाइफ के अगेंस्ट में काम करता है, इट इज कॉल्ड एज असुर। रिदम को हम सुर कहते हैं और एंटी रिदम को हम असुर कहते हैं। ये सुना है वर्ड ना आपने, सुर असुर, और इनके बीच में टसल चलता रहता है। व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? सुर और असुर एक दूसरे को खींचते रहते हैं ना। उसको कहते क्या है? समुद्र मंथन। समुद्र मंथन कहते हैं। समुद्र मंथन कहीं और नहीं हो रहा, इट इज हैपनिंग एवरी डे इन योर बॉडी। इफ असुर विंस, यू विल गेट इनटू डिजीज। तो क्या आपने सुर को पकड़ने के लिए कुछ किया? आपको कहते हैं भजन करो, थोड़ा नाचो, थोड़ा गाओ, कुछ भी करो, मगर ये जरूर करो, उपासना करो। रिदम में डालने के लिए आपको पता नहीं क्या क्या कितना टेक्नोलॉजी दिया हुआ। इतना टेक्नोलॉजी दिया हुआ ना कि आप अगर उसको पढ़ने जाओ ना, यू कांट रीड इट इन वन लाइफ। आई एम जस्ट टचिंग, आई एम जस्ट सेइंग द मेथड। हम भी करवाते हैं उसी, वो स्वर से ही होता है। स्वर के बगैर तो आप कोई और चीज नहीं कर सकते। यू कांट क्रिएट अ रिदम ऑफ लाइफ। So we run different programs. We run a program for people, for ladies who are not able to conceive. जो conceive नहीं कर पा रहे उनके लिए प्रोग्राम करते हैं। गर्भाधान, we call it गर्भाधान। वहां पे हम मून के साइकिल के साथ में उनको सिंक्रोनाइज करवाते हैं। एंड लेडीज कम एंड से कि मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो डिस्टर्ब था वो ठीक हो गया। मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आ ही नहीं रहा था ठीक से, वो आने लग गया ठीक से। तो सिंक्रोनाइजेशन के तरीके हैं, और ये तरीके हर जगह पे बिल्डिंग किए गए हैं इस कल्चर, पर हम उधर देख ही नहीं रहे। और जब डिसिंक्रोनाइज हो जाता है तो वापस सिंक करने की कोशिश करते हैं।
Do you know yoga and these things, spiritual practices, are done more by Western people than Indian people? They have come to this realization that होगा तो ये मेथड जो भारतीयों ने पहले बनाए थे उसी से होगा. तो है तरीके, there are ways and means to synchronize. Now you say circadian rhythm, आपने एक शब्द पकड़ लिया, but basically वो circadian rhythm जहां से आया, क्या उन्होंने कोई तरीका दिया उसको सिंक करने का? कोई तरीका नहीं दिया. तो नामकरण संस्कार से सोल्यूशन नहीं मिलता है ना. नाम तो आप कुछ भी रख लो, इतना कॉम्प्लेक्स नाम रख लो कि आप मुंह से बोल नहीं पाएंगे, फिर क्या हो जाएगा? आपको क्या फायदा हुआ उससे? सो प्लीज ओपन योर आईज. योर बॉडी इज मैजिक. सपोर्ट योर बॉडी. Okay, Vandana ma'am, you can unmute yourself and ask your questions. Yes, This is yes, the ma'am. Good evening. last question Good will evening. take. Good evening, हाँ, Guruji. last question. I am a gynecologist. My age is 64 years. Since 15 years, I have got intractable insomnia. Okay. I am not, the Insomnia. medicines are not working at all. Medicines are not working at all. हाँ, they stop working after some time. The And dosage I am keeps 15 increasing. years suffering from it, and I am really troubled by it. Now, the earlier question and this problem is correlated. Now, how I'll tell you, I'll give you a little brief about things. We can't explain it in detail here. So just a little brief about things. So fundamentally, your body needs 5 basic rhythm of the body. And they are correlated also. So the first rhythm is called as Kama. Kama, disturbed rhythm. I'm talking about disturbed. There are 5 basic diseases. So if you do everything just for your survival, then what will happen? You will detach yourself from the existential rhythm. जब केवल सेल्फ सर्वाइवल पे जिंदगी जीती है ना, कि मेरे को कमाना है, मेरे को अपने लिए ठीक करना है, बाकी आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट नेचर एंड अदर थिंग. सो इट इज कॉल्ड एज काम. उसको काम कहते हैं. सो इन आवर कल्चर इट इज ऑलवेज सेड निष्काम भाव भी रखना चाहिए. तो वी गेव अ सोल्यूशन फॉर दैट. डिजीज पहले बताया, उसका सोल्यूशन. सो काम निष्काम. सो डू समथिंग for everything, for everyone, for the nature, for not just yourself, for everybody else. वसुधैव कुटुंबकम के भाव में रख के कुछ करो. So we also call it सेवा. तो अगर आप केवल सर्वाइवल करेंगे ना, तो you will get into a disease. Now काम से क्या आता है? एजिटेशन आता है बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर. If you just think about yourself, then you will have ideas about things. And if it doesn't get fulfilled, you will get agitated. आज देखो लड़ रहे हैं ना लोग, नहीं ये सही होता, ये गलत होता. You create ideas. The moment you create ideas, if your ideas doesn't get fulfilled, you will get into rage. क्रोध में आते हैं. तो काम से क्या निकला? क्रोध. इसका solution क्या है? It is called as बोध. I'm talking about these rhythms in the body. इसका solution क्या है? बोध. बोध का मतलब क्या है? Do not create an idea. Just try to look at things the way they are. So that is called as bodha. If you strengthen that quality, you will become Buddha. You will become Buddha. So bodh जो है वो बुद्धि है. एक और वर्ड आता है बुद्धि है. और अगर वो नहीं आया तो क्या बन जाएंगे? बुद्धू बन जाएंगे. So क्रोधी कौन होता है? बुद्धू होता है. So काम, क्रोध, रेज, गुस्सा आता है. आपका आइडिया फुलफिल नहीं होगा तो एक और चीज आएगी इसके साथ में. गुस्से के साथ में क्या क्या आएगा? डर आता है. जो डरा हुआ इंसान होता है ज्यादा गुस्सा करता है. जो वीक फील करता है ना, वो ज्यादा गुस्सा करता है. You know, in blood pressure, the body has become weak. That is why the blood pressure is increasing. And blood pressure patient gets into rage very fast. बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उनको. Because they have become weak. अब देखिए, समझना पड़ेगा इसको. वीक होने के कारण गुस्सा आता है. अब स्ट्रांग है तो गुस्सा आएगा, तो वो वैसा गुस्सा नहीं होता जैसा वीक होने के कारण गुस्सा. सो काम, क्रोध, भय. तीसरा आ गया भय. भय को क्या? भय का सोल्यूशन क्या है? लय. व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ भय? इफ यू आर नॉट इन रिदम, यू विल गेट इनटू फियर.
तो उसको रिदम में आने के लिए क्या है, जो मैंने बताया कि कितने सारे तरीके थे। सबसे पहला तरीका क्या बताया था, इष्ट धारण करो, गुरु धारण करो, ट्रस्ट लाइफ। आप जीवन को ट्रस्ट करेंगे ना तो आपका रिदम बनेगा। तो इष्ट धारण करो, गुरु धारण करो, ये सॉल्यूशन था टू क्रिएट अ रिदम ऑफ लाइफ। तो लय, टू क्रिएट अ लय। भय के बाद में क्या आता है, इसके बाद में अगर डर वाला इंसान है, उसकी सांस को देखो जरा, उसकी सांस बहुत ज्यादा रिदम नहीं होती, बहुत ज्यादा उथली होती है। प्रश्वास, फोर्थ डिजीज इज प्रश्वास, रिदम ऑफ ब्रेथ डिस्टर्ब, गेट्स डिस्टर्ब। और प्रश्वास का इलाज क्या है, विश्वास। विश्वास, अगर विश्वास नहीं होगा तो सांस बिगड़ जाएगी, सांस का रिदम बिगड़ जाएगा। और सांस का रिदम बिगड़ जाएगा तो लास्ट डिजीज बता रहा हूं, अनिद्रा, नींद नहीं आ पाएगी आपको। तो व्हाट इज निद्रा? निद्रा बेसिकली इज अ रिदम, जिसे आप नींद कहते हैं। स्लीप का कोई मीनिंग नहीं होता, निद्रा का मीनिंग होता है। निद्रा का मीनिंग होता है आपका लाइफ का फंडामेंटल रिदम ठीक है, निद्रा का मीनिंग ये होगा। सो द नियर बाय थिंग इज ब्रेथ। अगर वो रिदम ठीक होगा तो आपकी ब्रेथ रिदम में होगी। देन नियर बाय थिंग इज, अगर आपका ब्रेथ रिदम में होगा, अगर आपका ब्रेथ रिदम में होगा तो आपकी लाइफ लय में होगी। यू विल डू थिंग्स एंड यू विल सक्सीड। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, आप बहुत कोशिश करेंगे तो भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो भय, लय, लय में सक्सेस मिलता है, भय से सक्सेसफुल नहीं होता कोई। और लय आ गया, आपके जीवन में लय आता है तो बोध उत्पन्न होगा, बुद्धि बनती है। हाँ? और जब आपकी बुद्धि और बोध होगा ना, तब आप सबके लिए काम करते, तब आप लाइफ, फंडामेंटल लाइफ के लिए काम करते, केवल अपने लिए नहीं जीते। सो निष्काम भाव आ जाता है, अपने आप ही आ जाता है। ये सॉल्यूशन तो मैंने दे दिया आपको, इसमें से कहीं भी पकड़ लो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमारे पास बहुत केसेस है, दे वर नॉट एबल टू स्लीप, दे वर मेंटली डिरेंज्ड, उनको पता नहीं कितनी दवाइयां खानी पड़ती थी, और मेंटली वो ठीक नहीं थे। वो आज सारी दवाइयां छोड़ के सो रहे हैं अच्छे से। वो कह, ऐसे ऐसे लोग आते हैं, कहते हैं कि पहली बार हमने दवाई नहीं खाई और हम गहरी नींद सो। जस्ट थिंक अबाउट क्या अचीव कर लिया उन्होंने लाइफ में। आपको नहीं, जो लोग सोते हैं उनको नहीं मालूम ये कि अनिद्रा क्या होता है। आप भगवान भी आएंगे ना तो आप सबसे पहले क्या मांगेंगे, और मुझे सोना है, यस और नो। तो ये बहुत एग्जाम्पल है ऐसे। एक गारंटी देता हूं मैं आपको, 100% कोई भी स्लीप एंड इस तरीके से माइंड रिलेटेड इशू है, 100% आप निकल जाएंगे। सॉल्यूशन दे रहा हूं, 100% निकल जाएंगे, गारंटी भी दे रहा हूं। क्योंकि आपका ये गारंटी मैं किस बात पे दे रहा हूं, क्योंकि मुझे ह्यूमन बॉडी के बारे में चीजें मालूम है, ये दिखता है। इस वजह से मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप भरोसा कीजिए अपने शरीर पे, ये आपको निकाल देगा, मगर उसकी तरफ में थोड़ा काम करना पड़ेगा। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर ईच इंडिविजुअल मे वेरी। यूजुअली लोग आते हैं, कहते हैं 1 हफ्ते में ही नींद आना शुरू हो जाती है, बट देयर माइट बी पीपल हु हैव गॉन, क्योंकि आपने इतनी दवाई खा के इसको इतना खराब कर दिया कि इसको वापस अगर वापस ठीक करने की कोशिश करेंगे तो इट विल टेक अ लिटिल टाइम। तो मैं आपको डील दूं, 1 साल में आपकी सारी प्रॉब्लम निकल जाएगी। इज इट अ बैड डील? आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है एक्चुअली। इट इज नॉट अ बैड डील, दिस इज द ओनली डील। तो प्लीज हेल्प योरसेल्फ, प्लीज हेल्प दिस ह्यूमन सिस्टम, प्लीज हेल्प आवर फ्यूचर। इस देह को बचा लीजिए, वर्क टुवर्ड्स इट। ठीक है? अदर कोई, if you have other questions, you can put down in the WhatsApp group you are a part of, or you can also put it down in the chat box. है ना, हम आपको फिर उसके आंसर अलग से कर सकते हैं। Swamiji, one question 2 people are asking is why customization after 9 weeks? Why not in the first week when the symptoms are told?
No, customize. We are customizing the practice. Once you learn the practice, only then we can customize. Otherwise, what? Somebody said, why does Swamiji need fee? मतलब आपको खाना नहीं खाना होता क्या? इस दुनिया में कुछ भी चीज ना आप सोचते हैं फ्री आता है, ये फ्री वाला आइडिया छोड़ दो, अदरवाइज यू विल बिकम इनकेपेबल. आप सांस भी लेते हो ना तो भी एफर्ट करते हो. तो हमारे देश में ये चीज ना गलत है. आपको गुरुद्वारे में जो खाना मिलता है ना उसके लिए कोई पैसा देता है. सो कहीं भी कुछ फ्री नहीं होता. वट एवर यू आर गेटिंग फ्री, देयर इज समबडी पेइंग फॉर दैट. ये एटीट्यूड भी छोड़ दीजिए प्लीज. मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये एटीट्यूड छोड़ दो. आप एक पैसा हमारे कल्चर में है, आपको कुछ पैसे देता है ना कोई इंसान, तो आप ₹1 बढ़ा के देते हो, कभी भी कम नहीं देते. सो हेल्प योरसेल्फ. आप अपने आप को केपेबल बनाइए. ये ना सोचें कि हमारे को फ्री में मिल जाएगा या ऐसा कुछ होगा. फ्री में कुछ भी नहीं आता. पहली बात तो ये, फ्री की बात करेंगे तो आप गरीब हो जाएंगे. मैं नहीं चाहता कि आप गरीब हो. मैं चाहता हूं आप वैभवशाली हो. भारत वैभव का देश है. हाँ, किसी को कुछ प्रॉब्लम है और अफोर्ड नहीं कर पाते या ऐसी सिचुएशन है, लेकिन ऑलवेज टॉक टू अस. अपना नंबर छोड़ दीजिए, आप हमसे बात करिए, हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, क्या है, उसके हिसाब से. अदरवाइज वी हैव केप्ट द फी अफोर्डेबल एंड वी हैव टू रीच आउट टू लॉट ऑफ पीपल. हमें बहुत काम करना है. रादर मैं तो कहूंगा आप हमारे फाउंडेशन में थोड़ा पैसा डालो ना लोगों के लिए काम करने. यू मेक योरसेल्फ दैट केपेबल, है ना. ये वाली बातें मत करें, ना तो आपकी किस्मत खराब हो जाएगी, आपका भाग्य खत्म हो जाएगा. फ्री में कभी भी नहीं लेना. बेशक से उसके लिए आप उसको प्रेज कर दीजिए, कभी भी कोई चीज फ्री में मत ले. ये नियम आप बांध दीजिए. आपके लिए अगर कोई कुछ करता है ना तो आप उसको खूब आशीर्वाद दे दीजिए, अगर कुछ नहीं दे सकते तो, मगर फ्री में मत लो. आप गरीब हो जाएंगे, आपकी लाइफ खराब हो जाएगी, आपका भाग्य खराब हो जाएगा, आपकी आगे की जनरेशन सफर करेगी. तो ये एटीट्यूड ना रखें कम से कम. आप जो दे सकते हैं जरूरत से ज्यादा दीजिए उसको. किसी को आप जो दे सकते हैं, आप अपने आप को केपेबल बनाइए कि आप ज्यादा दे सकते हैं. बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो दे कैन टॉक टू अस सेपरेटली. विल सी हाउ वी कैन हैंडल दैट. उसको हम अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश करें. सो ऑन दैट नोट विल क्लोज दिस वेबिनार. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए, समय देने के लिए. और मैं आखिर में भी यही कहूंगा कि प्लीज हेल्प योरसेल्फ, प्लीज हेल्प दिस बॉडी. इसकी हेल्प जरूर करें. और आप लोगों को आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं.